Let's begin then with a word of prayer. Is somebody going to open us there? ओके और हम चाहते हैं कि आप में से कोई दुआ के साथ आज के कलाम के लिए जो है वो दुआ करे। तो आप में से कोई भी पास्टर यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो। इस खूबसूरत घड़ी, इस खूबसूरत मौका के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बंदा पास्टर जोसेफ के लिए, खुदा भाई इमरान के लिए, हाजिर जमायत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब जब तेरा बंदा सिखाने का खुदावन तेरे कलाम को सीख कर औरों तक पहुँचे, खुदावन तेरे कलाम के गहरे मुकाशफात, तेरे कलाम की गहरी बातें खुदा जान कर औरों को सिखाने के काबिल बने। ऐ खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत देना और भाई इमरान को खुदावन खुद तौफीक बख्शना के ताकि वो अच्छे से सलीस करके खुदा तेरे लोगों तक खुदा तेरे कलाम को पहुँचाए, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम मुस्तफ़ीद होकर खुदावन ये कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो और हम तेरे कलाम से सीखे जाने और बरकत को हासिल करें। तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत देना। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। Amen, amen. Amen. Well, let me begin today by saying Happy Easter. और सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगाज करें, मैं आप सबको हैप्पी ईस्टर कहना चाहता हूं। I do believe that the resurrection of our Lord took place in the year 30, AD 30. और मुझे इस बात का यकीन है और मैं ये समझता हूं कि 1830 में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस सदी में आए और उन्होंने मौत को बर्दाश्त की और फिर से जी उठे। And that's give or take about 3 years. और ये 3 साल इस रोए जमीन पर वो रहे। So today would be Happy Easter 1992. और आज तकरीबन 2000 साल बाद भी हम उस ईस्टर को मना रहे हैं। On a Sunday, 1992 years ago, Jesus rose again from the dead. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले इस इतवार पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनकी जो ये त्यौहार है, ये 1992 साल पहले ये तमाम वाकयात हुए। And so here we are talking about him almost 2000 years later. और हम इन चीजों के बारे में तकरीबन 2 साल बाद ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं। But happy Easter to you this weekend. और आप सबको ईस्टर की खुशियां मुबारक हों। So let's turn, we're continuing through Romans chapter 4. Let's turn to Romans chapter 4 verse 9. और आज हम रोमियो उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत से शुरू करेंगे। And we're starting here in verse 9. और हम 9वीं आयत से इसका आगाज करेंगे। Cometh this blessedness then upon the circumcised only, or upon the uncircumcision also? For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. और यहाँ लिखा है, पस क्या ये मुबारकबादी मखतूनों ही के लिए है या ना मखतूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। Verse 10. How then, or how was it then reckoned when he was in circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision. और 10वीं आयत में लिखा है, पस किस हालत में गुनाह किया, मखतूनी में या ना मखतूनी में? मखतूनी में नहीं बल्कि ना मखतूनी में। Abraham is the model for Paul here of what it means to be justified by God. और यहाँ अब्राहम जो है वो पौलुस रसूल के लिए एक मॉडल है। और यहाँ रास्तबाजी क्या है? The blessedness in verse 9 that he's talking about has been clearly explained. और यहाँ 9वीं आयत में जो बरकत है वो वाज़े तौर पर बयान कर दी गई है। When we look back at verses 7 and 8, we see that this blessedness is the complete forgiveness of sin. और जब हम 7वीं और 8वीं आयत में देखते हैं तो ये जो बरकत है ये गुनाहों की मुकम्मल माफी है।
Their iniquities are forgiven. Their sin is covered. Their transgressions are erased. और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे गुनाह, हमारी खताकारियां, हमारी बुराइयां जो हैं वो माफ कर दी गई. Verse 8 shows this as the sin of that man will not be imputed to him. और यहाँ हम देखते हैं 8वीं आयत में कि उस शख्स का गुनाह जो है वो इन पर ना डाला गया. This is the blessedness of the Christian. This is the blessedness of our father Abraham. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो बरकत है जो हमारे मसीहियों के पास है, और ये वो बरकत है जो हमारे बाप अब्राहम के पास है. He calls David, King David, to witness this blessedness in David's life as well. और जो बादशाह दाऊद है वो भी खुदा की इस बरकत की गवाही देता है. This is the blessedness that he's talking about at the start of our verse today, verse 9, where we began. और ये वो बरकत है जिसके मुतल्लिक हमने 9वीं आयत में सीखा है. And he's going to make a very important point here about how Abraham's works play in his faith. और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो तमाम काम अब्राहम के ईमान में जो उसने किए. You have to see this. आपको इन पर गौर करनी है. To understand Christianity, you have to see that Abraham was given righteousness before he obeyed God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मसीही होने के नाते हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जान सकें कि अब्राहम को रास्तबाजी उसके कामों से पहले मिल गई. You have to see what he means already here when he says, what we've read, that God justifies the ungodly. और यहाँ हम सबको जानने की जरूरत है कि किस तरह से खुदा जो है वो नामख्तूनों को जो है वो इस बरकत के लिए चुनता है. That God does not justify sinners because sinners have earned it. और खुदा जो है वो गुनाहगारों को रास्तबाज ठहराता है ये इसलिए नहीं कि क्योंकि उन्होंने इसके लिए काम किया है. Paul, for chapters already, has explained sin and our condition in it. और पौलुस रसूल ने इसके लिए एक बाब लिखा है और फिर हमारी इसमें हालत को बताया है. He has shown that the law simply shows the sin problem. और यहाँ जो है वो पौलुस रसूल गुनाह के मुतल्लिक बताता है. In this chapter, here in Romans 4, he is explaining plainly that Abraham was not justified by doing right things with God. और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम के लिए खुदा का कलाम ये बताता है कि वो इसलिए रास्तबाज ना ठहरा क्योंकि उसने अच्छे और भलाई के काम किए थे. Circumcision becomes the chief work that he uses to show this. और हालात उसके लिए आसान हो गए जो कुछ यहाँ हमें दिखाया गया है. Circumcision is the primary work that Paul points to as Abraham's obedience to God. और हालात उसके लिए साजगार हो गए जैसे ही उसने खुदा की फरमाबरदारी की. All godly people obey the commandments of God. और तमाम खुदा के लोग खुदा के हुक्मों को मानते हैं. Abraham did too. और अब्राहम ने भी ये किया. But you must see the point that he was given righteousness by God before he was circumcised. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ नुक्ता ये है कि अब्राहम को ये रास्तबाजी इससे पहले मिली कि वो ये तमाम काम करता. This is crucial to having a good theology.
और ये बड़ा जरूरी है एक मसीही थियोलॉजी। It establishes the doctrine of grace alone. और ये फजल को बयान करने के लिए एक बेहतरीन डॉक्ट्रिन है। This is why Paul is talking about Abraham here in this chapter. Abraham was justified by grace alone. और यहाँ यही वजह है कि पौलुस रसूल अब्राहम की रास्तबाजी को जाहिर करता है, और यहाँ हम देखते हैं कि ये खुदा के फजल के वसीला से हुआ। This is almost 40 years before Isaac was born. Yes. This was almost 40 years before Isaac was born. और ये अब्राहम के बेटे इसहाक से तकरीबन 40 साल पहले हुआ। And it was getting close to 20 years before Abraham was circumcised. और ये इसलिए था कि अब्राहम उन हालात से गुजरता इससे पहले ये सब कुछ हुआ। So it's not like Abraham was given righteousness a few hours before he was circumcised. और ये उस वक्त नहीं मिला जब खुदा उसे इन हालात से गुजारना चाहता था, उससे 2 या 3 हफ्ते पहले नहीं हुआ। According to the timeline in the book of Genesis, Abraham was given righteousness going on nearly 20 years before he was circumcised. और अगर हम पैदाइश में देखें तो पैदाइश के मुताबिक तकरीबन इससे पहले कि अब्राहम आजमाया जाता, इन हालात में से उससे 20 साल पहले उसको रास्तबाजी दी गई। And I'm saying all this because Paul is going to go into this line of questions here in this chapter that we'll see how plain this is to understand. और यही वजह है कि पौलुस रसूल उसका जिक्र करके उन तमाम सवालों के जवाब दे रहा है जो यहाँ किए जाते हैं खुदा के बंदा से। And before I do, let me just say again that this blessedness that we're talking about that comes on people, और इससे पहले कि हम इसको वजाहत से बयान करें, ये वो खुदा की बरकत है जो वो अपने लोगों को देता है। it is the blessedness of the doctrine, or what we call justification. और ये वो वजाहत है जिसकी हम आज डॉक्ट्रिन के मुतालिक सीखेंगे, जिसे हम रास्तबाजी कहते हैं। Justification means that we are made completely right with our God. और यहाँ हम देखते हैं कि रास्तबाजी का मतलब ये है कि हम मुकम्मल तौर पर साफ किए गए उसके फजल के वसीला से। This blessedness means that God has accepted us. इस बरकत का मतलब ये है कि खुदा ने हमें कबूल कर लिया। It means that God has completely promised to remove our sin and to bring us to himself. और इसका मतलब ये है कि खुदा ने हमारे साथ कभी वादा किया कि वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा और हमें अपने साथ जोड़ लेगा। Paul wants to explain to his readers how God does this. और पौलुस रसूल अपने कायरीन, अपने पढ़ने वालों के लिए इसकी वजाहत करता है कि खुदा ने ये किस तरह किया। And so here in Romans 4, he goes all the way back to Abraham and the work of circumcision. और यहाँ इसीलिए वो अब्राहम की जिंदगी में आने वाले हालातों, वाकयात, आजमाइशों का जिक्र करता है। Okay, so when you see here in verse 9, this idea right here in the English, cometh this blessedness. और जब यहाँ हम इस नजरिए के मुतालिक देखते हैं, यानी कि इस बरकत की तरफ आना, When you see that idea, blessedness, think justification. और यहाँ जब हम मुबारकबादी के लिए देखते हैं, इस बरकत के लिए देखते हैं। So look at the question that Paul asks here in verse 9. और यहाँ देखें कि पौलुस रसूल ने जो 9वीं आयत में सवाल किया।
He asks, does this blessedness or this justification come upon only those who have been circumcised? और यहाँ वो ये कहता है, पास क्या ये मुबारकबादी मखतूनों ही के लिए है, Or does it come upon the uncircumcised also? और फिर वो ये कहता है या ना मखतूनों के लिए भी है. And remember that Paul is writing this to a group of Roman Christians. Almost all of them were not circumcised. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल ये चीजें रोमियों के एक ग्रुप के लिए लिखता है जो तमाम के तमाम आजमाए ना गए थे. I don't know if any of you listening to this have been circumcised. Any of you men? और अब मुझे इस बात का उम्मीद नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं आप भी किसी तरीके से इस आजमाइश से गुजरे हैं. If you have not been circumcised, then this question is asked for you and for anyone as well in Rome. और अगर आप इस तरह की आजमाइश से नहीं आजमाए गए तो फिर आपकी तरह रोमियो के उन लोगों के लिए भी ये सवाल था कि जो आजमाए गए उसके अलावा भी कोई खुदा की इस रास्तबाजी को पा सकता है. Okay, in verse 10, how was this blessedness reckoned? Was it when Abraham was circumcised or when he was uncircumcised? और फिर 10वीं आयत में वो कहता है, पस किस हालत में गिना गया, मखतूनी या ना मखतूनी. He answers and then he asks, or excuse me, he asks and then he answers the question. और वो सबसे पहले जो है वो सवाल पूछता है और फिर जवाब देता है. He says that this righteousness was reckoned to Abraham well before he was circumcised. और वो कहता है कि मखतूनी में नहीं बल्कि ना मखतूनी में, इससे पहले कि वो आजमाया जाता. So listen, this righteousness that was given to Abraham did not come because of circumcision. और यहाँ हम देखते हैं, गौर करें कि ये जो रास्तबाजी है ये आजमाए जाने के वसीला से नहीं है. This is so important. और ये बड़ा ही जरूरी है. Abraham was justified by God before he was circumcised. और अब्राहम जो है वो खुदा की तरफ से रास्तबाज किया गया इससे पहले कि वो आजमाया जाता. It is a simple matter of understanding the timeline. और ये एक सादा सा मसला है, चीज है वक्त के हवाले से. Abraham, well before he was circumcised, when his son Ishmael was born, और ये इससे पहले हुआ जब अब्राहम का बेटा इस्माइल पैदा होने वाला था और वो मखतूनी में नहीं बल्कि नामखतूनी की हालत में था. Abraham was 99 years old when it happened. He was given righteousness almost 20 years before that. और अब्राहम उस वक्त 99 वर्ष का था जब उसके साथ ये हुआ, और ये चीज अब्राहम के साथ जब हुई इससे 20 साल पहले खुदा ने उसके साथ रास्तबाजी का काम किया. Abraham's story, which is between Genesis 12 and Genesis 25, और अब्राहम ने एक कहानी के मुतालिक हम देखते हैं जो पैदाइश 12 से लेके 25 के दरमियान है. generally follows a timeline in the man's life. और ये इंसान की जिंदगी में वक्त की एक तरतीब को आम तौर पर इंसान की जिंदगी में जाहिर करती है. His circumcision comes in chapter 17. और उसका आजमाए जाना नामखतूनी जो है वो 17वें बाब में मिलती है. But his justification came in chapter 15. लेकिन उसकी रास्तबाजी जो है वो हम देखते हैं कि 15वीं आयत में है. So if anybody ever said to Paul, Abraham was justified or blessed because of circumcision,
और अगर कोई भी ये सवाल करे कि अब्राहम अपने हालात आजमाए जाने के वसीला से ये सब कुछ मिला है या फिर किसी और वसीला से, Paul would say, no, Abraham was blessed in God before he was circumcised. और अब्राहम पौलुस रसूल इसका जवाब देता है ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि जो अब्राहम है वो नामख्तूनी में ही रास्तबाज ठहराया गया। And so we see here continuing in verse 11. और हम इसके मुतल्लिक 11 आयत में तिलावत करेंगे। And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness. Excuse me, let me share this. And he received this sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had, yet being uncircumcised, Okay. that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. Are you there, Imran? और यहाँ yes, ahead. sorry there was Yeah, go give me ahead. 1 minute. Yep. Give me 1 minute on. Okay. Yes, brother. Go ahead and read verse 11. Okay. और 11वीं आयत में लिखा है, और उस खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो सबका बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून हुए के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी मसूब की जाए। Let's read verse 12 too. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had, being yet uncircumcised. और फिर लिखा है, और उन मखतूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मखतून है बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जिसे ना मखतूनी की हालत में हासिल था। So what is Paul saying here to his Roman Christian audience? और यहाँ गौर करें कि पौलुस रसूल इन रोमी जो हाजरीन हैं उनसे क्या कहता है। He is saying that Abraham is the model for all believers, circumcised or uncircumcised. और यहाँ वो ये फरमाता है कि अब्राहम एक वाज़े मिसाल है उन लोगों के लिए, एक नमूना है जो मख्तून है या फिर ना मख्तून है। This would stop anyone from saying you cannot be saved unless you are circumcised. और ये आपको बताना चाहता हूं कि ये किसी के लिए भी जो है वो मख्तून है या फिर ना मख्तून है, किसी के लिए भी ये वाज़े है। Salvation, justification comes by grace alone. और जो वजाहत है वो सिर्फ और सिर्फ जो रास्तबाजी है It does not come. It does not come Okay. by works. It does not come by circumcision. Yes. Justification does not come by works. It does not come by circumcision. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रास्तबाजी है आपके अमाल की वजह से नहीं, आपके कामों की वजह से नहीं। Now you and I may look at this and say, what's the big deal? तो फिर मैं और आप ये कहेंगे तो इसमें बड़ी डील क्या है, बड़ी चीज क्या है। We may say, why is this so important that he would spend all these verses talking about circumcision? तो हम फिर यहाँ देखेंगे कि उसने ये तमाम आयात क्यों लिखी इस मख्तूनी की हालत को और नामख्तूनी की हालत को बयान करने में।
Now, anyone that's read Paul's letters knows that in the first century, this was a big deal. Yes. Anybody that's read Paul's letters knows that this was a big deal in the first century. Yes. You already said that? Brother, can you hear to me? Yeah, I hear you. Can you hear me? Am I there with you? Okay. Yes. Now I can hear you. Okay. That anybody that's read Paul's letters knows circumcision was a big deal with the Jews. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी ने पौलुस रसूल के खतूत देखे हैं तो ये रोमियों के लिए बड़ा मसला था मख्तून होना या ना मख्तून होने में. He dealt with this all throughout his letters. और उसने अपने तमाम खतूत में इसके मुतल्लिक बात की है. And we must see here that Paul's point is that God justified Abraham, gave him righteousness before his works. और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने वजाहत कर दी कि अब्राहम को रास्ताबाजी जो है उसके कामों से पहले अता की गई. That he did the works, but they came as a result of God's relationship with him. और ये उसे तोहफे के तौर पर दी गई, ना कि ये उन हुक्मों पर अमल करने के वसीला से था, शरीयत पर अमल करने के वसीला से था. Abraham did what he was commanded to do. और अब्राहम ने वही कुछ किया जो उसे करने का हुक्म दिया गया था. But those things are not what justified him. और लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी जो उसको रास्तबाज ठहराती. It's the same with you and me today. We will be given things we must do. और ये हमारे लिए भी एक ही है जो आज भी हम मसीही हैं. We will be, and we have been given commandments. और हम सबको हुक्म मिले हैं. And you should obey them. और आप सबको उनकी पैरवी करनी है. You should obey them with all your heart. और आपको इनकी ताबेदारी अपने पूरे दिल से करनी है. Your obedience will show that you love and that you revere and honor God. और अब अगर आप ताबेदारी करेंगे तो ये इस चीज को जाहिर करेंगे कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं और खुदा के हुक्मों के तले चलते हैं. But please hear me. Your works will no more justify you than Abraham's did. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ये अमाल, आपके ये काम आपको रास्तबाज नहीं ठहरा सकते जिस तरीके से ये अब्राहम को रास्तबाज ना ठहरा सके. Abraham is the model of the believer. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम ईमानदारों के लिए एक नमूना था. And Paul just told us that before he was circumcised, God blessed him with righteousness, justification. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि वो आजमाया जाता, वो ये तमाम काम खुदा की हजूरी में करता, खुदा ने उसे रास्तबाज ठहरा दिया. And so we continue in verse 13, just a few more verses this morning we have to go. और यहाँ सिर्फ चंद आयत हैं जो हम पढ़ने को हैं और हम यहाँ 13वीं आयत को भी पढ़ेंगे. He's going to make the point further. और उसने एक नुक्ता बयान किया. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. और यहाँ हम देखते हैं क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से. The righteousness of faith. और जो रास्तबाजी है ईमान की.
is the doctrine of justification by faith alone. और ये उस ईमान की वजाहत करती है और ये उसकी डॉक्ट्रिन है जो हमें बताती है कि सिर्फ ईमान ही के वसीला से रास्तबाजी है। It is the doctrine that God justifies the ungodly. और यहाँ हम देखते हैं ये वो नुक्ता है जो हमारे लिए अहम है कि खुदा नामख्तूनों को भी अपने लिए मुकर्रर करता है। He justifies by grace alone. और वो लोगों को रास्तबाज ठहराता है सिर्फ और सिर्फ फजल ही के वसीला से। God is the one who went to our father Abraham when he was still in Iraq. और हमारा खुदा अब्राहम के पास गया जब वो इराक में था। God called him out of Mesopotamia, out of Ur. God started the relationship. और हमारा खुदा ही था जिसने उसे उस जगह से निकलने के लिए कहा। And it's the same with you and me. God came to us. और ये आपके और मेरे लिए भी एक ही है और वो हमारे लिए भी आता है। God the Son, who left heaven, went to the cross. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमें छोड़कर आसमान पर उठाया गया। He came to us and he called us out of our pagan, dead, worthless lives. और वो हमें हमारे पास आया इस अजाब की जिंदगी से छुड़ाने के लिए। And he called us to fellowship with himself. और उसने हमें कहा कि हमें उसके साथ रफाकत रखनी है। He has given us promises. और उसने हमें अपने वादे दिए। Just like he gave to our father Abraham, जिस तरीके से उसने हमारे बाप अब्राहम को दिए। those who believe those promises जो लोग इन वादों पर ईमान रखते हैं are given righteousness before anything they say they could ever have done to have earned it. तो उनके लिए रास्तबाजी पहले से होगी जो ईमान रखते हैं इससे पहले कि वो कोई काबिल कद्र काम करें। The righteousness of faith that is ours in Jesus Christ और ये खुदा की वो रास्तबाजी है जो मसीह में हमें मिलती है। is a gift of God's mercy and grace alone. और ये खुदा के रहम और फजल का वसीला है। Okay, look at verse 13 again. It was not through the law that Abraham would inherit the world. और यहाँ वो कहता है कि ये अब्राहम की उस शरीयत के वसीला से ना था। The law is represented by circumcision. और जो शरीयत है वो उन हालात को आजमाए जाने को बयान करती है। That is not how Abraham would inherit the promise given to him. तो ये अब्राहम और उसकी नस्ल से ये वादा ना था शरीयत के वसीला से। The promises given to Abraham were not based on Abraham's obedience. और जो अब्राहम और उसकी नस्ल से रास्तबाजी का वादा किया गया था वो उसकी फरमाबरदारी की बुनियाद पर ना था। God would be the one that brings all of this to pass. और खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो उसके लिए रास्तबाजी का वसीला बनी। Abraham would inherit the earth because God brought it to pass. और उसके लिए अब्राहम के लिए रास्तबाजी और खुदा का मुकाम मिला क्योंकि खुदा उसके लिए ये सब कुछ करना चाहता था। This is the model of the Christian religion. और ये हमारे मसीही मजहब के लिए एक नमूना है। Remember that Abraham lived some 500 years before Moses. और इस बात को जान रखें कि अब्राहम जो है वो मूसा से तकरीबन 500 साल पहले रहा। And so obviously Abraham could not be blessed or given righteousness by obedience to the law of Moses.
तो इस बात को जान ले, क्योंकि अब्राहम जो है वो मूसा से पहले आया, तो ये रास्तबाजी फिर शरीयत के वसीला से ना हुई। The law hadn't been given and would not be given in Abraham's day for roughly 500 years. और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गौर करें, एक शख्स अगर 500 साल पहले किसी चीज की आता है तो फिर वो उसके वसीला से कैसे आजमाया जा सकता है। So obviously, the righteousness that Abraham received from God was in no way because he obeyed the law of Moses, because it hadn't been given yet. और मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिर इस बात पर कभी इत्काद रखें कि जो रास्तबाजी अब्राहम को मिली वो मूसा की शरीयत की फरमाबरदारी के वसीला से हरगिज़ ना थी। So circumcision becomes a representative of all law keeping. और जो मख्तूनी की हालत है, जो आजमाया जाना है, वो हमारे हालात जो हैं वो रास्तबाजी को नहीं लाते। And to those who saw the law as a way to receive righteousness, this teaching would stop them from saying it. और अगर आप ये कहना शुरू करें कि रास्तबाजी शरीयत के वसीला से है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। So this righteousness of faith does not come through circumcision or any keeping of the law. It came before all of it. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर ये रास्तबाजी जो है वो शरीयत पर अमल करने के वसीला से नहीं और ना ही आजमाए जाने के वसीला से है, ये उससे पहले से ही है। And ladies and gentlemen, this is the doctrine of grace alone. Ladies and gentlemen, this is the doctrine of grace alone. और मैं आपको मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, ये वो रास्तबाजी की डॉक्ट्रिन है। And it's so important. Look at verse 14. और यहाँ 14वीं आयत को देखें, ये बड़ी जरूरी है। For if they which are of the law be heirs, note this, faith is made void and the promise made of none effect. और यहाँ लिखा है, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा लाहासिल ठहरा। I hope you can see how important this is to understand because of what he just said here in verse 14. और मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई जरूरी है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं ये उसके मुतल्लिक हमें बताता है। Think again of your first century audience, of your Jewish person who thinks that justification comes by law keeping. और ये उस पहली नस्ल के लिए था, यहूदी नस्ल के लिए, जो ये समझते थे कि जो रास्तबाजी है वो शरीयत पर अमल करने के वसीला से है। That somehow our performance according to the law of Moses is why God would have mercy upon us. और यहाँ हम खुदा के उस फजल के मुतल्लिक देखते हैं कि जो खुदा ने हमारे लिए किया, कि क्यों ये फजल हमारे लिए जरूरी था। No one is throwing out the law. Jesus, Paul, they love the law. और कोई भी शख्स जो है वो शरीयत से भागना नहीं चाहता, वो शरीयत से मोहब्बत करते थे। They love the law. Paul's point here is that righteousness with Abraham did not come because of his obedience. Paul's point here is that righteousness did not come by the law. और यहाँ हम देखते हैं कि ये रास्तबाजी जो है ये शरीयत के वसीला से ना थी। If it does, look at what he says, faith is void, the promise is of no effect.
Did you catch that, Imran? If keeping the law is what brings this justification, then what God promised Abraham means nothing. और यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये शरीयत के ही अमल करने के वसीला से है तो फिर खुदा का वो वादा जो है वो बेफायदा और बेमकसद ठहरा जो उसने अब्राहम के साथ किया। That is not how Abraham was justified. It was not by the और law. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो अब्राहम के साथ हुआ और जो शरीयत के वसीला से है। So we are not throwing out the law. और हम सब जो हैं वो शरीयत से भागने वाले नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करने वाले हैं। We are not saying that the law is against the promise. और हम ये भी नहीं कहते कि शरीयत वादे के खिलाफ है। No, the law is a part of the promise. बल्कि ये कहना चाहूंगा कि शरीयत जो है वो वादे का एक हिस्सा है। But righteousness came to the Hebrews through and with Abraham by grace alone. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रास्तबाजी है वो अब्राहम और फिर अब्रानियों के लोगों के लिए सिर्फ फजल ही के वसीला से हुई। Circumcised, uncircumcised, doesn't matter. It is those who believe. और जो कोई मखतून या ना मखतूनी की हालत पर ईमान रखता है, आजमाए जाने और ना आजमाए जाने के मुतल्लिक ईमान रखता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। This is our New Testament doctrine of Jew and Gentile all being invited to Jesus. और ये वो हमारे अहद की नई डॉक्ट्रिन है मसीहियों के लिए और उन तमाम दूसरी अक़वाम के लिए। And I want to finish through verse 16 today. So let's move on to verse 15. और मैं 16 आयत के साथ इसका इख्तिताम करना चाहूंगा और 15वीं आयत को पढ़ें। Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. और यहाँ हम कहते हैं कि शरीयत तो गजब पैदा करती है और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ हुक्म अदूले हुक्मी भी नहीं। It has been well said that the commandment makes sinners into transgressors. और यहाँ हमने देखा है कि जब हुक्म नाज़िल होते हैं तो फिर हुक्म अदूली भी होती है। That when God says, do not do that. और जब खुदा ये कहता है कि ये ना करो, and you do it nonetheless. और फिर भी आप उसको करते हैं, that your sin becomes a transgression because you have violated an express written commandment of God. तो फिर ये जो हुक्म है ये आपके लिए सजा का एक पैमाना बन जाता है क्योंकि जो कुछ तहरीरी सूरत में आपको हुक्म दिया गया आपने उसकी वादा खिलाफी की। The 10 Commandments become this through the law of Moses. और 10 अहकाम भी जो शरीयत के वसीला से आए वो भी इसी। And so the law brings wrath on all those who violate it. Imran, I think I lost you. Are you there? Hello. Yes. Oh, did you get that last statement from me or should I go back? Okay, brother. Sorry, the signal was bad. Yeah, that's okay. Did you get my last statement? Yes. Okay, let's just go on to verse 16. और आइए हम 16वीं आयत को पढ़ें। Therefore, it is of faith that it might be by grace
to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. और यहाँ 16वीं आयत में लिखा है, इसी बात से वो मिराज से ईमान से मिलती है, ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुले नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम के मानंद ईमान वाली है, वही हम सब का बाप है। आमीन। It is of faith, that means righteousness is of faith. और यहाँ हम देखते हैं कि ये एक वादा है, और ये हम देखते हैं कि ये जो रास्तबाजी है ये ईमान के वसीला से है। Faith is Abraham believed God, और फेथ ये था कि अब्राहम ने खुदा पर ईमान रखा, and it was reckoned to him as righteousness. और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। This establishes the doctrine of grace and grace alone. और ये वो डॉक्ट्रिन है जो फजल और सिर्फ फजल के बारे में ही बताती है। This makes it sure both to the Jew who has been given the law of Moses, और ये उन तमाम के लिए है, यहूदियों के लिए भी जिनको शरीयत मिली, and to us Gentiles who were not of the Hebrew tradition. और फिर हम सब के लिए जो गैर अक़वाम हैं, जो यहूदियों में से नहीं थे। Abraham becomes our model because he came before the law of Moses, yet he was justified. और अब्राहम जो है वो हमारे लिए एक नमूना है, क्योंकि वो मूसा की शरीयत से पहले आकर खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करता है। This is a masterful treatment by the Apostle Paul to go back to Abraham. और ये अब पौलुस रसूल की तरफ से एक अहम मॉडल के तौर पर पेश की गई चीज थी कि जो उसने बयान की, and to show how the righteousness of faith has worked from the beginning. और यहाँ हम देखते हैं कि ये वो रास्तबाजी है जो खुदा की वो रास्तबाजी को जाहिर करता है, ये वो मंसूबा है। It is this verse in chapter 4, right here in verse 5. और ये वो रोमियोस का 4 बाब उसकी 5 आयत है। But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. और यहाँ लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। He has just established, verse 5, और ये 5वीं आयत उसके लिए बयान की जाती है by showing that Abraham was justified before circumcision entirely. और फिर ये बताती है कि ये वो रास्तबाजी है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईमान के वसीला से है। Abraham was justified by grace alone, and that is our only hope as well. और अब्राहम जो है वो सिर्फ फजल ही के वसीला से रास्तबाज ठहरा, और ये हमारी भी उम्मीद है। So that's our final verse for today. और ये हमारी आज की एक आखिरी आयत है। But I want to remind you again, before next week, Lord willing, और खुदा की मर्जी से और अगले हफ्ते के पहले that Paul's going to tie all that we're looking at here with Abraham to you and me in Jesus today. और हम जो है वो देखेंगे वो तमाम चीजें जो अब्राहम के साथ हुई और पौलुस जिन पर ईमान रखता है और जिन पर हम ईमान रखते हैं उनके मुतल्लिक जानेंगे। He is saying all of this to explain how God will impute righteousness to his readers then. और यहाँ ये तमाम चीजें इसलिए उसने बयान की ताकि वो बता सके कि खुदा किस तरीका से अपने बंदों के लिए रास्तबाजी को नाज़िल करता है, जाहिर करता है।
And so we'll spend time seeing that, Lord willing, next week. और हम ये सब कुछ खुदा के फजल से और उसकी मर्जी से अगले हफ्ते सीखेंगे। Happy Easter. और आप सबको हैप्पी ईस्टर। We celebrate that every day. और हम हर रोज इसको मनाते हैं। It is through the resurrection that you and I can become children of Abraham. और ये उस मसलूबियत और उसके फिर से जिंदा किए जाने के बाद मुमकिन हुआ कि हम अब्राहम के बेटे और बेटियां कहलाने वाले बने। It is through belief that Christ died and rose again to justify us. और ये उस ईमान के वसीला से है जो हम रखते हैं कि मसीह मोवा मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और ये तमाम उसने हमारे लिए किया। That when we believe it, we are the blessed like Abraham. और जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो हम भी वो बाबरकत होंगे जिस तरह अब्राहम था। This is the work. Believe on Jesus. और ये वो काम है जिन पर हमें इत्काद करना है, हमें उस पर ईमान रखना है। Grace alone. Amen. और ये सिर्फ फजल ही के वसीला से है। आमीन।